Which article Constitution of India safeguards one's right to marry the persons of one choice? Which article? Article 21. Indian safeguards of right. Marry the person of one choice. वो एक शादी कर सकता है. One rights to marry. कोई शादी कर सकता है वन चॉइस में. With reference to land reforms in independent India. Which one of the following statement is correct? Land reforms. The major aim of land reforms was providing agricultural land to all the landless. All the landless agricultural lands. Under which schedule 1 of the Constitution of India can transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void. Fifth schedule. Under which schedule the Constitution of India? So tribal land to private parties for the mining be declared null and void. Fifth schedule. Schedule tribe and schedule caste. शेड्यूल कास्ट की जमीन को किसी को नहीं, शेड्यूल नहीं दे सकते किसको. एक्चुअली इन इंडिया अभी गवर्नमेंट कंपनियों के लिए कुछ भी कर रहा है. 9 शेड्यूल Constitution India during the prime membership. नैन शेड्यूल किसको दे रहा है? The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the membership of Jawaharlal Nehru. Under which leaderships? 5th schedule. Constitution of India can transfer the tribal to private parties को जो गया था. Schedule Constitution of India can transfer the tribal land to private parties. फिफ्थ शेड्यूल में माइनिंग डिक्लेयर हुआ था null and void. स्टूडेंट्स इलेक्शन लड़ो. इलेक्शन लड़ो. पार्टी को भरोसा मत करो, बर्बाद हो जाएगा इंडिया, वर्ल्ड, एवरीथिंग. कोई ट्रम्प आ रहा है, कोई पुतिन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है. सब इलेक्शन लड़ो, भरोसा मत करो. भरोसा भगवान हमारी भरोसा में बैठा हुआ होगा. आप लोग कुछ करो. In the federation established by the government of India in 1935, residuary power were given to Governor General. पहले गवर्नर जनरल का पास रेजिडरी पावर था, अभी राष्ट्रपति का बस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आधार कार्ड कैन बी यूज फॉर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. नो, आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. वंस इश्यू आधार कार्ड कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड. हो जाएगा, इशू अथॉरिटी डीएक्टिवेट कर सकते हैं. जेएनयू में लोग अभी जेल जा रहे हैं सरकार के खिलाफ बोल के. अरे चुनाव लड़ो, देश को कुछ बताओ. और यूनिवर्सिटी राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ. प्राइवेसी बहुत बड़ा चीज़ है. आधार कार्ड. प्रोविजनल लिबर्टी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएट? आर्टिकल 21 द फ्रीडम ऑफ गारंटेड इन द राइट्स. आर्टिकल 21. स्टूडेंट्स चुनाव लड़ो. प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? खुद सरकार बनो. भारत में 40 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 and 182 related to child labor. With reference to the election for President of India, consider the following statement. With reference to President of India, the value of the vote of each MLA varies from state to state. हाँ करता है. जेएनयू स्टूडेंट प्लीज चुनाव लड़ो. दिल्ली स्टूडेंट्स, सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स चुनाव लड़ो. किसान, वो टेस्ट करके 700 किसान डाइड इन दिल्ली. वाई डाइड? क्यों मर रहे हो? चुनाव लड़ो.
Which one of the following reflects the nicest appropriate relationship between law and liberty? If there are no laws, there is no liberty. Which one of the following reflects nicest appropriate? लॉ जहाँ पर है लिबर्टी वहाँ पर है. द वैल्यू ऑफ वोट एमपी ऑफ द लोकसभा मोर देन द वैल्यू ऑफ नहीं राज्यसभा नहीं. हर राज्य में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट अलग अलग है. वोट क्यों खरीदा जा रहा है? आम आदमी कुछ नहीं कर रहा है. डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट क्लास calls in activity. Democracy superior the intelligence and character of ordinary men and women. The fact that the intelligence and the character of ordinary men and women. Democracy superior virtue lies. Ordinary men and women, but democracy superior. डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा अमेरिका. नाउ इलन मस्क मेक्स ए पार्टी अमेरिकन पार्टी. सो इंडिया में हरीश पार्टी ओनली 2 पार्टी. Russia people fears to Putin. So don't fear election. Trying election. JNU students and other students contest elections. Only पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in the following. The preamble. हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हुज कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन दे रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल इंडिया इक्वलिटी लिबर्टी समानता नागरिकता से बोलने से नहीं होगा. इलेक्शन राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया. राइट टू वोट एंड इलेक्टेड इन इंडिया. दिस इज द लीगल राइट्स. राइट टू वोट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. संविधान का अधिकार होना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए. ये अमेंडमेंट होना चाहिए. कुछ तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. फंडामेंटल ड्यूटीज. कुछ छात्र जेल में है सरकार के खिलाफ होकर. इंडिया के लोगों को बताओ. तुम एमपी खड़े हो जाओ दिल्ली JNU. किसी को गाली मत दो. गाली देने से फायदा नहीं होगा. Which the following statement is true? Fundamental duties of the Indian citizens. A legislative process has been provided to enforce the duties. Legislative process has been provided. Fundamental duties of the citizens. A legislative process. Fundamental duty legislative process. In the context of India, which one of the following is correct? इंडिया बहुत अच्छा देश है और देश को अच्छा कौन बनाएगा? Fundamental duties. They are correlated to regular duties. Fundamental duties, legal duties. The context of India, which one of the following? Context of India, which one of the following is the correct relationship between the rights and duties? Rights and duties के अंदर कौन कोरिलेटिव है? राइट्स एंड आर कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज. अधिकार ड्यूटी के साथ कोरिलेटिव है. बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज. व्हिच आर द फॉलोइंग अमंग मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मेन एडवांटेजेस of the government is that the executive remains responsible to the legislature. Executive हमेशा legislature and in India judiciary review implies the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionally laws and executive orders. Constitutionality संवैधानिकता law and executive order. भारत के जजेस कुछ नहीं बोल सकते क्यों ना उनका भी परिवार है. The power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of law. Local self-government can be explained as an exercise in democratic decentralization. Local self-government, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण. For election in the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by
एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन्स कर सकता है। मेनी एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेजेस क्या है? एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल। Principle among the following was added to directive principle of state policy by 42nd Amendment to the Constitution. Participation of workers in the management of industries. हाँ, वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, कोई भी सरकारी मैनेजमेंट में वर्कर रह सकता है। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग, which of the following statement relating to cultural and educational rights in India is not correct? Cultural and educational right. States are in granting aid to educational institutions. Which of the following statement is related to cultural and educational right? States are not correct. Cultural and educational right. Every citizen of India has right to conserve its language, script and cultures. लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को राइट कंजर्व कर सकता है एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन। स्टेट्स नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट आउट ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज। नो सिटीजनशिप्स, कोई सिटीजन को निकल नहीं सकता है। कौन निकला? सिटीजन भारत में तो कुछ नहीं कर रहे। टू बी एलिजिबल टू कंटेस्ट अंडर द हरियाणा पंचायत एज ऑफ 2015, the candidate should have a functional toilet at home, have payment slips of power bills, not to be cooperative loan defaulter हरियाणा पंचायत राज इलेक्शन में। अब पेमेंट्स ऑफ स्लिप ऑफ पावर बिल्स दिया होगा, कोऑपरेटिव लोन्स डिफॉल्टर नहीं होगा, मैट्रिक्स नहीं है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन इंडिया फेडरल सिस्टम्स करेक्ट? फेडरल सिस्टम में कंसेंट ऑफ स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग इट्स बाउंड्रीज। स्टेट बाउंड्री को, स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए रिक्वायर्ड टू अल्टरिंग इट्स बाउंड्री को चेंज। देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप इंडिया, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ओनली इंडियन सिटीजनशिप, स्टेट नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following objective being addressed by the e-governance. E-governance means dissemination of information about policies and schemes of the government. Dissemination of information, providing information on public queries, facilitating settlement of dues to the government. Providing information on public queries के ई गवर्नेंस मतलब डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की पॉलिसी स्कीम। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक क्वेरीज, पब्लिक का जो क्वेरी है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट ड्यूज। Which one of the following statement relating to directive principle of state policy? Directive principle of state policy. Facilitating settlements of dues to the government. ये गवर्नेंस सेटलमेंट ड्यूज को गवर्नमेंट को पे करने के लिए। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक क्वेरीज, जनता ही बचा सकता है देश को, आंदोलन से नहीं, इलेक्शन। स्टेटमेंट रिलेटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। प्रोविजन कंटेंट इन द पार्ट IV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट, एनफोर्स नहीं कर सकते। चुनाव लड़ो किसान, नौजवान, छात्र, स्टूडेंट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, कंट्री के गवर्नेंस के लिए।
it is shall be duty of state to apply DRT principle in making laws करने के लिए स्टेट का DRT principle state policy are fundamental in the governance of the country, governance के लिए. The president can declare a national emergency. The written recommendation of union cabinet. प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कर सकते हैं यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन में नेशनल इमरजेंसी. ऑर्डिनेंस भी कर सकते. एक्सेसिबिलिटी लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू सर्विस. देश का बच्चा, स्टूडेंट्स, किसान, नौजवान, छात्र शुड बी कंटेस्ट, शुड बी वोट करो, गरीबों को वोट करो, स्टूडेंट्स को वोट करो. और आम किसान, 700 किसान मर गए दिल्ली में प्रोटेस्ट करके. क्या फ़ायदा हुआ? 700 चुनाव लड़ते तो जीत जाते, एमपी बन जाते. इंडियन पार्लियामेंट फुल ऑफ किसान फार्मर्स. क्यों शहीद हो रहे हो किसी के खिलाफ बोल के? मत बोलो, खुद के बारे में बोलो. जेएनयू स्टूडेंट्स, इंडियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, खुद खड़े हो जाओ इलेक्शन में. Accessibility legislation is intended to improve access to service for disabled people. Accessibility legislation intended to improve access to service for disabled people के लिए in both the physical and virtual worlds. In both physical virtual worlds में accessibility legislation means accessibility. Improve access to service for disabled people in both physical and virtual worlds में. Which of the following are the powers of Supreme Court of India? Supreme Court. Regional jurisdiction of India dispute between the government of India and one or more state. Jurisdiction dispute between the government of India and one more state. Regional jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है. कौन करेगा? सबकी तो परिवार है. साधारण आम जनता कुछ नहीं करता है. द पार्ट टू हियर अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट का सुनता है. पैसिंग डिक्रीज और ऑर्डर्स फॉर डूइंग जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट. डिक्री पास करता है. एन ऑर्डर. रेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मैटर्स ऑफ लॉ. एडवाइस भी दे सकता है. Which of the following in every world, every country, there contest elections. Now Elon Musk of America making party, American party. India में छात्र पार्टी बनाओ. Which of the following statement is correct regarding the preamble of Indian Constitution? Preamble of by itself it is not enforceable in the court of law. So in the court of law, preamble by itself नहीं कर सकते. कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे जज? सब डरे हुए हैं. The preamble of state objectives which constitution seeks to establish and promote. Preamble state the objectives constitution seeks to establish and promote करने के लिए. Preamble indicates the source from which the constitution derives its authority. Preamble indicates source from which constitution derives authority. सोर्स फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी लाया है. प्रियम्बल भी वही बोल रहा है. प्रियम्बल और डायरेक्ट प्रिंसिपल. प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल स्टेट ऑब्जेक्टिव व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश. सारे लक्ष्य भारत में हैं. जजेस क्या बोलेंगे? जजेस का तो परिवार है. आम जनता कुछ नहीं करता है तो जजेस क्या करेंगे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 Constitution of India. Article 21 violated when the under trial prisoners are detained under the judicial custody और an indefinite period के लिए. जब कोई जेल में रहता है, बोलेगा कौन? Right to life is one of the basic human rights and not even the state has the authority to violate the right. Life is one of the basic human rights. Not even the state has authority to violate the right. वायलेट नहीं कर सकता. वायलेट होगा 21 जब अंडर ट्रायल बिजनेस डिटेन्ड अंडर द जुडिशियल कस्टडी फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड के लिए. वुमेन का राइट कुछ नहीं.
Which one of the following statement regarding freedom of managing religious affairs as per the Constitution of India? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हमारे देश को जनता को चुनाव लड़ना चाहिए। अमेरिकन इलॉन मस्क मेक्स पार्टी, इंडिया में पार्टी नहीं बन रही है। स्टूडेंट्स कौन देश को बचाएगा? कोई नहीं आएगा। Which are the following statement regarding freedom to manage religious affairs as per the Constitution of India? Every religious denomination shall have the right to manage its own affairs in matters of religions. Every religion or any sections thereof shall be the right to own and acquire movable and immovable property. Manage religious affairs के लिए और any section thereof shall be have the right to own and acquire करने के लिए movable and immovable property. Every religious community has the right to establish and maintain institution, कर सकते हैं institution for religious and charitable purposes के लिए. Every community has the right to manage their own affairs in matters of religions. Every community has the right to manage its own affairs in matters of religion. धर्म की बेसिक में. Constitution Assembly of India is correct. Constitution of India is correct. Assembly was elected indirectly by the members of the provincial. Constitutional Assembly India elected by the members of the provincial legislative assembly. Constitutional Assembly elected हुए थे provincial legislative assembly, प्रांतीय सरकार, and the scheme of election was laid down by the cabinet delegation. Cabinet delegation भी what? Which among the following is basic feature of the Constitution of India? Unquestioned right of the Parliament to amend any part of the Constitution. पार्लियामेंट का अमेंड कर सकता है कौन? बेसिक फीचर नहीं। फंडामेंटल राइट्स बेसिक फीचर, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, फेडरलिज्म से बेसिक फीचर इंडिया का। Which one of the following statement is not true of the Protection of Women from Domestic Violence Act? To such नहीं, such act provides civil remedies to protect women subject to domestic violence. The act provides civil remedies to protect women subject to domestic violence. Only a woman can make a complaint under this legislation. Women can make a complaint कर सकते हैं domestic violence. The act includes not just wives but also women in marriage-like relationships. Women from domestic violence. Act indicates not just wives but also women in marriage-like relationships. Women can make a complaint. This provides civil remedies to protect women subject to domestic violence. Remedies to protect women subject to domestic violence. किसी को गलत में नहीं फंसाना चाहिए। तो पैसा के लिए कुछ भी किया जाता है बट इट ठीक नहीं। The appropriate legislature can repeal or amend. Which one of the following statement with regard with 9th schedule of the Constitution of India? 9th schedule. It was inserted by Constitution, First Amendment Act 1951. 51 में 9th schedule इंडिया में घुसा था। Which of the following are constitutional provision and laws for the protection of rights of the scheduled caste? Which of the following the act regulations specified in the 9th schedule shall become void or ground that it violates a fundamental right in part 3. 9th schedule भी violate void if it violates fundamental right को. Supreme Court has power to judicial review on act included in the 9th schedule में on the doctrine of basic structure की doctrine पर Supreme Court has power to judicial review कर सकता है. Which of the following are constitutional provisions
and laws for the protection of rights of the scheduled caste. Rights 1, 2, 3. Article 17 of the Constitution of India, Constitutional provision. प्रोटेक्शन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल कास्ट. आर्टिकल 17 and the Protection of Civil Rights Act 1955. ये सब शेड्यूल कास्ट का. शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स. Atrocity Prevention of Atrocity Act 1989. Civil Rights Act 1955. Which among the following act were repealed by 9395 of the Constitution of India? 395. The Government of India Act 1935. 1935. 95 Constitution of India. India Independence Act 1947. Which among the following act were repealed here? 1935 1947. Abolition of PV Constitution Act. Government of India Act भी YA. Article 37. Which of the following statement is not correct with respect to protection of individual being tried for offence? Which one of the following statement is not correct with respect to protection of individual? कौन सा correct for offence के लिए? A confession can never be used as evidence against the accused. Confession नहीं होगा evidence. An accused cannot be tried and punished for the same offence के लिए tried नहीं होगा. The quantum of a punishment must be provided in law as it existed on the date of commission of an offence. Quantum of punishment must be provided. Existed on the date of commission. Quantum of punishment must be provided. Quantum of punishment. With reference to Grammar Nyaya. Act which of the following statement is true? The Act allows local service activists as mediators and reconciliators. Government local service activist, meditator and conciliator. Consider the following statement. A panchayat constituted after a premature dissolution continues only for the remainder period. The panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट जो सरपंच जाने के बाद डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड के लिए डिसोल्यूशन कंटिन्यूज. Which of the following given correct? The first session of the Constitution Assembly was held in first session of the Constitution Assembly न्यू दिल्ली में होता है फर्स्ट सेशन. Which one of the following language is not recognized in the schedule? The schedule में English not recognized in the schedule of the Constitution. In which one of the following cases the constitutional validity of the Muslim Women Protection Right? Divorce Act 1986.